सो लास्ट क्लास में हमने यूनिटरी मैट्रिक्स का डेफिनेशन एंड सम एग्जांपल देखा और प्रॉपर्टीज भी देखा था कि सम ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिसेस इज नीड नॉट टू बी यूनिटरी बट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिसेस इज अगेन अ यूनिटरी मैट्रिसेस, और उनके हमने प्रूफ्स भी लिखे थे। तो आज के क्लास में हम जनरलाइजेशन कर लेते हैं प्रोडक्ट का। तो इफ यू आर टेकिंग सपोज दैट यू आर टेकिंग एन, इसको हमें करना है किससे, किस कलर से, रेड से ना, व्हाइट व्हाइट तो चलेगा नहीं, येलो चलता है इस पे ना। नहीं, येलो नहीं चलेगा। कौन सा, ये ब्लैक कलर, ओके। सो थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब रिजल्ट नंबर थर्ड, दैट जनरलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस। तो इसको आप लिख लीजिए, दैट इज, सो इफ वी कैन से, इफ A1 A2 अप टू AN, यहाँ पर n हमारे पास यूनिटरी मैट्रिसेस हैं बी, matrices of same order, then their product that you can say A1 A2 up to AN, ठीक है, it will be again in a unitary matrix is also, okay, got it. So this is a generalization of the product of two unitary matrices. नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ आते हैं, अबाउट द स्केलर मल्टीपल, ओके। तो बताइए, सानिया आप बताइए कि क्या एक यूनिटरी मैट्रिक्स में कोई स्केलर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो रिमेन द यूनिटरी मैट्रिक्स और नॉट? क्या वो यूनिटरी मैट्रिक्स बनी रहेगी? नो सर। ओके, सर क्यों? वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगी ना। रिजल्ट हाँ, उसका मतलब that एक will be not कॉन्जुगेट again a में। identity matrix if you are multiplying some scalar, because scalar यस scalar सर। से मल्टीप्लाई होके a जो ट्रांसपोज होता है वो आइडेंटिटी ओ ट्रांजुगेट आइडेंटिटी आना चाहिए, है ना। ये डेफिनेशन होती है यूनिटरी मैट्रिक्स की। दिस इज ए स्टार एंड दिस इज योर ए स्टार ए, दैट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी। बट अगर हम यहाँ पर ए को रिप्लेस कर देते हैं के टाइम से सम स्केलर से मल्टीप्लाई करके, तो दैट शुड बी इक्वल टू के ए स्टार, ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए। और यू नो दैट दिस इज के, दैट इज ओके, बट के स्टार से के बार बाहर आता है एंड दैट विल बी ऑफ ए स्टार। तो दिस विल बी इक्वल टू के बार इंटू ए स्टार, और ए स्टार विल बी आइडेंटिटी, दैट इज ओके। बट के बार को मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉड ऑफ के का स्क्वायर होता है ना, एंड दैट विल बी आइडेंटिटी। पता है ना, जेड बार इज जस्ट इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ये तो होता था। तो हेयर दिस मॉड ऑफ जेड it should be equal to 1, है ना, that will be equal to +1 or -1, then you can able to say कि वो होगा, otherwise not, okay। तो in general scalar multiple of a unitary matrix is not in unitary matrix remains, okay। so let's write the result. So the scalar multiple of unitary matrix need not be unitary, ओके, इन जनरल। ठीक है, तो अगर हम इसको इन अदर वर्ड्स अगर लिखना चाहें तो इफ यू मल्टीप्लाइंग सम स्केलर के, तो इफ दिस ए इज एनी यूनिटरी मैट्रिक्स, एंड दिस स्मॉल के
is any complex number, then this is Ka may or may not be unitary. Okay. When it will be unitary? When the we are choosing some complex number k, said that modulus of k is unity, है ना? Modulus of k is unity. तो उस केस में हमारे पास वो यूनिटरी मैट्रिक्स बन जाएगी. तो उसके लिए भी रिजल्ट आप लिख लीजिए, तो ये रिमेंबर रहेगा. If A is a unitary matrix and there is a k, some scalar, then this is Ka is unitary if and only if this is modulus of k होल स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू वन, है ना? तो यहाँ पर हमने देखा भी मॉडुलस ऑफ, अगर ये वन हो जाएगा तो दिस इज सिंपली आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, है ना? तो इट मीन्स मॉडुलस ऑफ शुड बी इक्वल टू वन, या फिर यू कैन से दैट मॉड ऑफ के इज जस्ट इक्वल टू वन. क्लियर? तो दिस इज द uh, uh, for the matrix scalar multiple will be unitary is only when this k is modulus of k is वन. जो हम स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका मॉडुलस वन होना चाहिए. ओके. व्हाट अबाउट द पॉजिटिव इंटीग्रल पावर? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिसेस अगेन यूनिटरी मैट्रिसेस, देन इफ यू हैव टेकन एनी यूनिटरी मैट्रिक्स एंड उसके इंटीग्रल पावर करते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, तो वो भी हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स ही रहेगी. You can also write that result. ये सारे रिजल्ट नोट करते रहिएगा अपनी नोटबुक में. सो इफ नोट करके इनको पढ़ना है, यू हैव टू रीड आउट एंड रिमेंबर दीज रिजल्ट्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. ओके. सो इफ ए इज अ unitary matrix, then any positive integral power of A is also a unitary matrix. It's a unitary matrix. Okay. So if is a unitary matrix, then any positive integral power of A is also unitary matrix. Okay. So if you want to prove it, you can also prove it easily. So you can see कि हमको क्या दिखाना है. If A is unitary, इसका मतलब है we have A star and this is A star A is just equal to identity. ओके. इफ यू आर टेकिंग इंटीग्रल पावर, इसका मतलब ए की पावर एन हम ले रहे हैं, है ना? ए की पावर एन. दिस इज मैट्रिक्स एंड वी हैव ए की पावर एन का स्टार. अब इसको हमें आइडेंटिटी दिखाना है एंड वी नो दैट ए की पावर एन का मतलब है ए को हम एन टाइम्स क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक. दिस इज मैट्रिक्स भी है. और ये भी हमारे पास एक पावर है, इसकी पावर हम ले रहे हैं स्टार. तो जो स्टार है वो रिवर्सल ऑर्डर में ओपन होता है ना? तो दैट विल बी ओपन इन सच अ वे, ये ऐसे ओपन होगा. दिस इज ए स्टार अप टू ए स्टार. गॉट इट? एंड फ्रॉम हियर यू कैन, आपको पता है कि यू जस्ट हैव दिस.
तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिसेस का वो एसोसिएटिव होता है। इसका मतलब ए कोलेक्ट विद दिस ए स्टार, फिर उसके बाद ये आइडेंटिटी बन जाएगा बिकॉज ए इज इन यूनिटरी मैट्रिक्स। फिर उसी तरीके से दिस ए अगेन विद दिस ए स्टार, एंड इन दिस वे we will get identity in the last. So this implies what? This implies if A is unitary, then A to power n is a unitary matrix. Got it? समझ आया? तो इसका मतलब है इंटेग्रल पावर ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स इज अगेन अ यूनिटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं, रिजल्ट नंबर 6। So if A is a unitary matrix, then its inverse, that is your A inverse, is also unitary matrix. Okay, A inverse क्या था? We know that A star is just equal to A star A, and that is equals to identity. So this implies this A star is nothing, that is your A inverse actually. Because if we are multiplying A and B are bit with A, we getting identity. So this implies A inverse is nothing, that is equals to B. Okay, तो यहाँ पर A star is your inverse of this matrix A. Okay, so conjugate of the matrix. Similarly, नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं। One thing we are going to prove here, that if A is a unitary matrix, then A star, because A inverse is nothing, that is your A star. तो जब A inverse है तुम्हारे पास यूनिटरी, तो A स्टार भी is also unitary. ओके, नेक्स्ट रिजल्ट, कॉन्जुगेट की अगर हम बात करें, कॉन्जुगेट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। कॉन्जुगेट ऑफ a unitary matrix is unitary. Okay, conjugate of unitary matrix is unitary. So let us see about the conjugate. प्रूव करते हैं इसको। So if I am taking A the unitary matrix, so let A is a unitary matrix. This implies we have A star just equal to A star A, and that is equals to identity. अब हमें क्या करना है? कॉन्जुगेट को देखना है। इट मींस वी आर गोइंग टू प्रूव दैट इज ए कॉन्जुगेट इनटू ए कॉन्जुगेट का स्टार इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी। ये हमें देखना है, दैट इज आवर टास्क। सो फ्रॉम हेयर यू कैन हैव, क्योंकि हमें पता है ए बार तो हमारे पास बार है, बट यहाँ पर जो ए बार का बार है, यहाँ पर ये जो ओपन होता है ए स्टार,
You can just open with this. इसको एक मिनट, just a second. So here you just take a bar outside, मतलब ये स्टार अंदर ले लो और ये बार बाहर ले लो, ठीक है. एंड यू नो वन थिंग, इफ देयर आर टू मैट्रिसेस ए एंड बी, ओके, एंड उनका होल बार हम ले रहे थे, तो वो ए बार इंटू बी बार में ओपन होता है कि नहीं होता? ये पढ़ा है रिजल्ट, ठीक है. तो हमने क्या करा, ये ए बार का स्टार था तो हमने इसको लिखा ए स्टार का होल बार, और इसको ऐसे लिख सकते हो ए स्टार, और ये इसका होल बार. और हमें पता है ए इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स, तो ए स्टार क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो दिस इज आइडेंटिटी का बार, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ रियल मैट्रिक्स, ओके. तो दैट विल बी इक्वल टू अगेन आइडेंटिटी. तो दिस इंप्लाइज दिस इज ए बार. समझ पा रहे सानिया? यस सर। जी सर. दिस इज योर ए बार, है ना, और इसका ए बार का स्टार, एंड वी आर गेटिंग आइडेंटिटी. तो सिमिलरली यू कैन एबल टू प्रूव दिस आल्सो. So this implies what? This implies A bar is a unitary matrix. Got it? So if a matrix is unitary, then the conjugate of that matrix is also unitary. And similarly, we have result for transpose. अगर ये कोई मैट्रिक्स यूनिटरी है तो उसका ट्रांजुगेट के लिए तो हमने ये रिजल्ट देख लिया, है ना, कि अगर कोई मैट्रिक्स यूनिटरी है तो उसका जो ट्रांजुगेट होगा ए स्टार वो भी यूनिटरी होगा, और वो बेसिकली इनवर्स को ही रिप्रेजेंट करता है. बट अगर हमें देखना है अबाउट दैट ट्रांसपोज इज आल्सो यूनिटरी, ये तो हमने देख लिया कि कॉन्जुगेट यूनिटरी होता है, बट अगर हम ट्रांसपोज की बात करें तो वो भी यूनिटरी होता है. तो लेट अस राइट अनदर रिजल्ट, दैट इज नंबर 9. What is the number 9? If A is a unitary matrix, then its transpose, it means A dash, is also unitary. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, if you are going to prove this result, if you are going to prove this result, so A is unitary matrix, then A dash is also unitary. So how you prove that? We have this simply, that is your A star and A star A is just equal to identity. What we have to prove? We have to prove this is A dash, ये ब्रैकेट हो गया, and A डैश का स्टार, ये हमें आइडेंटिटी बेसिकली प्रूव करना है. तो यू कैन जस्ट से दैट इज योर ए डैश, दैट इज ओके, एंड here you can just say that is A star का whole dash. So we have this is A dash and this we have A star का whole dash, and we have one result that AB का अगर डैश ओपन होता है, ट्रांसपोज लेते हैं, तो दैट इज ओपन विद B डैश A डैश, रिवर्सल ऑर्डर में ओपन होता है. तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, A स्टार पहले लिख दो, ए को बाद में ले लो और उसका होल डैश ले लो? बी कैन, है ना, बिकॉज ए बी का डैश इज जस्ट इक्वल टू बी डैश ए डैश. तो यहाँ पर ए, इसको हमने मतलब ओपन करके लिखोगे तो ए डैश ए स्टार का डैश, एंड यहाँ पर उसको उलट देंगे तो ए स्टार ए का होल डैश, एंड दिस विल बी आइडेंटिटी एक्चुअली.
है ना, ए स्टार ऑफ ए विल बी आइडेंटिटी बिकॉज ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, ओके। सो दैट विल बी रिमेन्स आई। तो यही हमें प्रूव करना था, तो वी गेट व्हाट, ए डैश जो कि ट्रांसपोज है ए मैट्रिक्स का, और उसका ट्रांजुगेट स्टार ऑफ दैट, एंड वी आर गेटिंग आइडेंटिटी। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज ए डैश इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। गॉट इट? समझ में आया? यस सर। तो इस तरीके के छोटे छोटे प्रूफ लिखने की हैबिट डालिए आप लोग। ठीक है, एक रिजल्ट्स को याद करना, सारे रिजल्ट्स को आपके दिमाग में नहीं रहेगा, बट जब टेक्निक्स आपके दिमाग में रहेगा तो आप आसानी से विजुलाइज कर पाओगे कि हाँ ये रिजल्ट यहाँ पर होल्ड करेगा ही करेगा। तो उसके लिए आपको हैबिट में डालना है कि दैट विल बी। सो लेट्स आई एम गोइंग टू राइट द रिजल्ट फॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट कैसा होता है? सो लेट्स राइट हियर द डिटर्मिनेंट, the determinant of a unitary matrix has absolute value 1। तो डिटरमिनेंट कुछ भी आएगा, उसका जो मॉडुलस होगा दैट विल बी 1। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स यू कैन आल्सो से, आई एम नॉट सेइंग कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता था वो या तो +1 होता था या फिर -1 होता था। बट यूनिटरी मैट्रिक्स का जो भी डिटर्मिनेंट होगा that will be some complex number, but modulus absolute value of that will be 1, it modulus of that complex number will be 1। So in other words you can say if A is a unitary matrix, then determinant of A is just equal to e की पावर आई थीटा फॉर्म, है ना। e की पावर आई थीटा फॉर्म क्या होता है, वेयर वी टेक द मॉडुलस ऑफ दिस यू विल गेट 1। तो ये सारी यूनिट सर्कल के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, वो सारा वैल्यूज आएगा एज अ डिटरमिनेंट फॉर एनी ऑफ द unitary matrix, and theta is any real number. So or you can just write in this way also, we here this is a plus iota b, if your any complex number is this then this is equals to a square plus b square। तो इन इस फॉर्म का होगा where a square plus b square is not equals to 0। तो इस तरीके से जो फॉर्म होता है द डिटरमिनेंट का फॉर्म, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी वो इस तरीके की एज अ डिटरमिनेंट आएगा, ओके। नेक्स्ट रिजल्ट याद रहेगा, द डिटरमिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स हैज एब्सोल्यूट वैल्यू 1 इन मॉडुलस 1। यूनिटरी मैट्रिक्स इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले इस रिजल्ट से पता चल गया कि अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो नहीं हो सकता तो मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन सिंगुलर। तो अ यूनिटरी मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। नेक्स्ट है अ रियल मैट्रिक्स इज यूनिटरी। तो अच्छा, अगर रियल मैट्रिक्स है तो उसमें जो जो हमारे पास कॉन्जुगेट है उसका कुछ महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि कॉन्जुगेट लेंगे रियल का तो सेम मैट्रिक्स बनी रहेगी। तो अगर रियल मैट्रिक्स है और उसको हम यूनिटरी बोल रहे हैं तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो एक रियल मैट्रिक्स जो कि यूनिटरी है तो वो ऑर्थोगोनल भी होगी, ठीक है।
तो a real matrix is unitary if and only if it is orthogonal. If and only if it is orthogonal. And a non-real means at least one element in non-real in a whole matrix. उस मैट्रिक्स के अंदर कम से कम एक नंबर ऐसा है जो x प्लस अयोटा वाई के फॉर्म में है, सच दैट x एक्स वाई इज नॉन जीरो, है ना। वाई जो है हमारे पास नॉन जीरो नंबर है। इट मीन्स इमेजिनरी नंबर वहां पर कोई ना कोई पड़ी हुई है थ्रू आउट द मैट्रिक्स, तो उसको हम बोलते हैं नॉन रियल, है ना। वो रियल नहीं है। रियल कब होगी? जब सारी इंट्रीज रियल है। ठीक है। तो अ नॉन रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैन नॉट बी यूनिटरी। अगर नॉन रियल मैट्रिक्स है और ऑर्थोगोनल भी कह रहे हैं कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो वो यूनिटरी मैट्रिक्स नहीं होगी। और नॉन रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैन नॉट बी यूनिटरी। And another we have a result that a non-real unitary matrix cannot be orthogonal. अगर रियल मैट्रिक्स है, यूनिटरी है, तो ऑर्थोगोनल भी होगी, ऑर्थोगोनल है तो यूनिटरी भी होगी। बट अगर नॉन रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो वो यूनिटरी नहीं होगी। और अगर नॉन रियल हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स है तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट। अ नॉन रियल यूनिटरी मैट्रिक्स कैन नॉट बी ऑर्थोगोनल, कैन नॉट बी ऑर्थोगोनल। क्लियर? तो दीज आर रिजल्ट्स ऑन द यूनिटरी मैट्रिसेस। आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि लेट्स राइट वन क्वेश्चन हियर, सॉल्व करिए साथ साथ में। दैट इज सो दैट 1/5 -1 + 2 -4 -2 and this is 2 -4 and this is -2 -. This is a matrix is unitary, and find A इनवर्स। तो ए इनवर्स बेसिकली क्या होता है? ट्रांजुगेट ऑफ दैट मैट्रिक्स, है ना। ए इनवर्स यहाँ पर क्या होता है? फॉर द ऑर्थोगोनल दैट इज योर ए स्टार। ए स्टार का मतलब होता है वी आर टेकिंग कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज टुगेदर। तो let's write the solution of it. So A is what? This is given here matrix. So let this is A is just equal to what? That is equals to 1/5, and ये जो मैट्रिक्स लिखी हुई है this is -1 + 2 iota -4 -2 iota and this 2 -4 iota and this is -2 -iota। ओके। और अगर हम ए स्टार की बात करते हैं तो ए स्टार हमारे पास क्या होता है? ट्रांसपोज भी लेना है, साथ साथ में हर एक नंबर का कॉन्जुगेट भी लेना है। तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो दिस इज, अच्छा इसका कॉन्जुगेट भी लेना है इस नंबर का, तो दिस इज -1 -2 अयोटा -1 -2 अयोटा एंड ये वाली -4 + 2 अयोटा एंड दिस इज 2 + 4 अयोटा एंड दिस इज -2 + अयोटा। ओके, सो दिस इज बेसिकली दिस वे। ओके, नाउ ए स्टार को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/5 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा? 1/25।
ओके, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहली रो विद द फर्स्ट कॉलम। तो दिस इज 1 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब माइनस का 4, है ना, 2 2 जा 4, एंड माइनस माइनस प्लस, तो प्लस, एंड दैट विल बी 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 5, है ना। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 1, थोड़ा और इसको नीचे कर लो मल्टीप्लाई। अगर मान लो मल्टीप्लाई करते हैं हम, दिस इज -1 प्लस 2 अयोटा विद विद -1 -2 अयोटा, तो क्या आएगा बताइए आप लोग। -1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज माइनस ऑफ 2 iota का होल स्क्वायर। तो फ्रॉम here we get 1 and this is 2 to the 4 and iota square is -1, तो प्लस का 4 is equals to 5। तो यहाँ क्या मिलेगा, ये फर्स्ट 5, and then you are multiplying second one, this is minus का 4 and -2 iota with the second one, that is your -4 plus 2 iota। So here you get what, -4 का होल स्क्वायर एंड दिस इज माइनस ऑफ 2 iota का होल स्क्वायर। So from here you get 16 and this is plus of 4, you get 20। So it will be have 5 plus 20, and जब हम सेकेंड रो के साथ करेंगे तो यू विल गेट 0 हेयर एंड दिस इज 0 एंड हेयर समवेयर अगेन यू गेट 25। तो ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, एंड जब 25 से डिवाइड करेंगे तो यू गेट आइडेंटिटी, दिस इज 1001 एंड यू गेट आइडेंटिटी। So this implies this is A is a unitary matrix, और यूनिटरी मैट्रिक्स है तो जो उसका ट्रांजुगेट होता है वही उसका इनवर्स होता है। तो दिस इंप्लाइज ए इनवर्स विल बी व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 1/5 एंड दिस ए स्टार एक्चुअली, है ना। तो दिस इज -1 -2 अयोटा एंड दिस इज 2 + 4 अयोटा एंड दिस इज -4 + 2 अयोटा एंड दिस इज -2 + अयोटा। क्लियर? तो दिस इज योर आंसर। ओके, तो नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करेंगे आप लोग।